बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस खत केस में कहा है कि अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मदाखलत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजाहत की 3 रुकनी कमेटी ने फैसला किया तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। The question arises, is it permissible for intelligence agencies to probe those being considered for appointment without obtaining their prior consent? ISI and IB report to the federal government and the Home Department to the provincial government, whose representatives, the law ministers and Attorney General, are members of the Commission. If the governments have reservations, these can be conveyed to the Commission by the said members of the Commission after they fully apprise themselves of the facts. The other members of the Commission will also then be able to seek clarifications and question the law minister and Attorney General. Presently, this cannot be done. The one-page ISI, IB and Home Department reports regarding the gentlemen under consideration are on a plain printed page and inexplicably have no date, number, name, designation and signature of their respective authors. No one assumes responsibility and therefore no one can be questioned. The reports which have been received also lack substance. The basic skeletal information that is provided is already... The point was that we put a stop to this. Yes. So there are people who are fighting for the independence of the judiciary. Maybe quietly nobody knew about it. This practice has now stopped. देखिए ये की कमजोरी किसकी थी? ये थी हमारी अपनी कमजोरी। जब हम खुद लोगों से रिपोर्टें मंगवाएंगे तो फिर हम उनका रोल उनको देंगे। देखिए ये हम एक चीज को बस कह दें कि जी आप करना छोड़ दो भाई, कल को आपकी इंटेलिजेंस भाई आप हमसे रिपोर्टें क्यों मंगवाते हैं? मत मंगवाया कर हमसे रिपोर्टें, ये हमने बंद कर दी। हमें किसी वकील के मुतालिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट नहीं, हमें अपने जराए हैं, हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें मालूम करना हो, हर वकील एक खुली किताब होता है, सबको पता होता है अच्छा है बुरा है कैसा है, दुनिया को पता है। हमें कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उसके लिए कोई रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें एक दफा नहीं कई दफा दोबारा लाई गई और इसको हमने हर दफा मैंने इसको strongly oppose किया है. So this is also an integral part of the report. When we start making monitoring judges, in my opinion, that is also, we are making JITs, we are relying upon intelligence agencies. Why are we doing this? When, this is very strange. You expand the scope of work and then you frown upon if they are doing things which they shouldn't. Therefore, a law is the paramount importance that there must be a law. If we have to give a report, then we should have a written order communicating that do this, which the Constitution does not envisage. I'm just speaking hypothetically. तो ये देखें ये चीजें जो है ना ये लोगों को पता नहीं है और बस और वो लोग जो उस दिन किस जगह खड़े थे आज कहाँ खड़े हैं. अगर कुछ बातों में अमल उज़्ज़त हो गया होता आज नहीं होता, क्योंकि आज आप उसका बेनिफिशियरी, कल आप उससे उसी बात का आपको नुकसान होगा. That's right. तो ये जो छोटे छोटे ज़ाती मफादात होते हैं ना आज और कल के, मुल्क के मफादात नहीं देखते हैं और लोगों के मफादात. और हमारे साथी ने जो बड़ी अच्छी बात की, और ये आम केस में नहीं होता है, ये खास किस्म के केसेस में अगर बात होती भी है. अब ये दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. अटॉर्नी जनरल साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं. आपने सारे ये पढ़ लिए. लास्ट टाइम व्हेन यू हैड अ मीटिंग विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड द प्राइम मिनिस्टर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया. नहीं सर. सो well, I saw that press conference. You and the एक तो कुछ कहा नहीं, बट दूसरा ये कि मिसकंडक्ट की तो सवाल ही पैदा होता. You were sitting there. नहीं, बट ये तो कोई एक सेकंड जरा सुन लीजिएगा. ये सारे जो अभी हाई कोर्ट्स ने नहीं सर, एब्सोल्युटली ये तो वैसे मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं कि ऐसी अगर कोई बात हुई है तो गलत है. आप निकाल लीजिएगा. दिस इज व्हाट यू हैड सेड एंड इट वाज आल्सो मैंने तो नहीं कहा था, बट अगर कहा भी किसी ने था तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं. प्रेजेंट इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस. अब सुन, बट मुझे ये तो नहीं याद तो ले कोई मिसकंडक्ट. क्या ये सारे हाई कोर्ट्स ने अभी मिसकंडक्ट किया? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भी नहीं किया. एक सेकंड जरा सुन लीजिएगा. बट मैं इसको एक्सप्लेन तो कर दूंगा. आपने अपने कॉन्डक्ट से interference since last hearing establish kar di, the kind of malicious campaign against the judges.
and the presumption is that the state obtained their personal debtors. आपने एक GIT बनाई थी जिसने 31 नोटिसेस इशू किए थे जुडिशरी के लिए. Did that GIT respond? I'm sure it did not. क्या वो देखे ना, I speaking for myself, I will never want any GIT. Let anyone say whatever they want to say against me. That is my test. Lekin, you see, if the state was not complicit, then the same GIT would have tried to protect them. It did not. This is, again, you see, the interference has been established through your conduct again. So it is not a simple issue. It is a continuing phenomena. There's a culture of deviancy that has been normalized by this institution. That's the question. पहली बात पे तो मैं, दूसरी बात से तो आपका पॉइंट है बिल्कुल. जो पहली बात है, अगर वहाँ पे हुई भी थी ये बात तो वो गलत बात थी. कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं था किसी जज का ये खत लिखना. सारी हाई कोर्ट्स ने भी उसको एंडोर्स किया. मैं मौजूद था. इन हाइंडसाइट शायद नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था बाकी वाले. बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर बात की थी किसी ने गलत की थी, मैं उसको बिल्कुल अदर हाई कोर्ट्स ने ज्यादा सीरियस चीजें कही हैं. पेशावर हाई कोर्ट के सबसे ज्यादा सीरियस है. वो तो कहते हैं कि हमें तो फिर बाहर से लाइफ थ्रेट्स आती है. तो ये तो बहुत सीरियस है. और बात ये, हम इस लेटर लिखा गया, इस पे बात हो सकती है कि अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, टाइमिंग पे बात हो सकती है. लेकिन एक बात तो तय है ना कि इस लेटर की वजह से बाकी जजेस भी बोल पड़े, उनको भी हिम्मत आई है, लेकिन अभी पूरा नहीं बोले. ये learned Attorney General speaking for myself, all these reports of the high courts are so serious and grave in nature that जिस तरह my lord ने last hearing में कहा था, the committee has to consider a full court so that the response is appropriate and there's a collective wisdom of this institution's highest body. When do we keep it next? I am in your hands. I think matter is important whenever. No, do you want to respond to the? In writing. No, I am of the view that, speaking for myself, that ये सारे high courts ने जो कहा है, आप इसका जवाब federal government and the intelligence agencies must file their replies. Response दें ना कि क्या, what do they say? Because all these reports are talking about agencies. So all the three intelligence agencies give a response. I'm speaking for myself. I don't know how the bench thinks, and also the federal government. Let them file affidavits. My Lord, saying that there has never been any interference. And who will file the affidavit? And these high courts. उनके तो नाम भी किसी को नहीं आते. And these high courts are not stating the facts. My Lord. Sorry. If this is what you want to say it. देखिए, I'm very clear. I mean, can I give an affidavit that there have been interference with the Supreme Court? I will say there has been. So we have to have specifics, we have to have time periods, we cannot have open-ended things like that. If you want an affidavit from me, I will give an affidavit there has been within the Supreme Court, not any outside agency. So let's not, we have to be careful. Are we looking to the past? If we're looking to the past, are we looking to the future? For me, the most important thing in all of this is your lack of legislation. This will continue endlessly. That may also not stop it, but that is an important milestone. The lack of legislation. There has to be legislation. Everybody has to operate within a certain parameters. How does he know that? Through some law. Okay, this is my law, this is my past, this is what I can do, what I can't do. So I think, तो आप अपने replies अगर आप फाइल करना चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है ना? जी सर. अच्छा ठीक है. ये अगेन कमिंग बैक, यू सी, आप खुद एडमिट करते हैं कि 2017 में इट वाज योर गवर्नमेंट and yet there was political engineering. So even if there's legislation, do you think it would make any difference? The executive, the Prime Minister and the Cabinet, they have taken an oath to uphold the Constitution.
and they are answerable to the people. They have to be honest and truthful to the people. Without a doubt. That happens, Without a doubt. there's no need for any legislation. So that लेजिस्लेशन एक जजमेंट मौजूद है, इसलिए वो तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस है. सारे जो हाई कोर्ट से आए हैं ना जी, इनका जवाब, I mean, I would imagine the federal government and the agencies give their response. You may also want to, like some honorable members have given suggestion what to do. You may also give those. My lord. The thing is, let's not just keep beating our breasts and ye ho gaya, wo ho gaya. Bhai, let's move ahead. I mean, let's make Pakistan functional. Let's work for the people. Let's administer justice. I mean, I think that's what it is, because everybody is so divided because they want to they only want to utter what's happened on someone else's watch. Okay, I put myself forward for accountability on my watch. Raise your finger now. I cannot be held accountable for what happened in the past. If you want to know, I'll tell you things you want to know about them. That's what purpose it will serve. I don't know if it will serve any purpose to ensure that these things do not happen in the future. You can give directives to things that this should not happen. That's an administrative act. You can enact legislation to prevent that from happening. We can, I mean, these are old matters. I mean, we can attend to them also, but then why only these old matters? Why not matters which are other matters also? Then that also, because then it looks very political if it's for only a certain period of time and you don't go beyond a certain period of time. I don't want to make it political. If you want to make it political, then it should go all the way. Great respect, it is not the past, it is today's. The High Court's reports are for today. So, jis tarah my lord ne kaha, file replies. And File replies and अब डेट कोई रख लेते हैं फिर हम notice to the parties नोटिस तो ऑलरेडी है. Are you on notice? Can I see the मैं last तो order? 27A के नोटिस पे भी हूँ और मैं तो नोटिस पे हूँ. बाकी पिटिशंस में भी नहीं हुआ. मैं तो नोटिस पे हूँ सर. ये तो हम Under in SMC, the last order I am on notice under Can I see 27A the also. order sheet last order में क्या था? जी. Sir, it's the petition file the reply and the agency file a reply with the order. बाकी petition हमें लेने paragraph 15, sir. तो इधर इसी को check करें. 14 was inviting suggestions from Supreme Court Bar and Pakistan Bar Council, and 15 you had directed जी issuance of notices. Sir, paragraph एक सेकंड एसपी सुप्रीम कोर्ट हाँ जी. we just order the निकाल के रखें. we'll take a short break and we'll come back. देख लें हमने नोटिस किया है हमने हाँ so Paragraph 14, 15. please I don't want people talking from all over the place. Two notices were issued. हम आते हैं उनको देखते हैं. coming back, We are coming back. coming back. समझ रहे क्या नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ताक़ा अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल समेत 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG नैब रेफरेंस वापस ले लिया. एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर दी. इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने शाहिद ताक़ा अब्बासी समेत 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की. डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अज़हर मकबूल अदालत पेश हुए, जबकि शाहिद ताक़ा के वकला भी अदालत में मौजूद थे. इस दौरान नैब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें नैब ने शाहिद ताक़ा अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की. अदालत ने नैब के रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए शाहिद ताक़ा समेत तमाम मुल्ज़िमान को रेफरेंस वापस कर दिया. अदालत की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और अब्दुल्ला खाकान, इमरान हक समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस खत्म हो गया. ज़रा ने बताया कि साबिक MDPSO इमरान हक ने इनकी दरख्वास्त पर नैब अथॉरिटी ने मेरिट पर रेफरेंस वापस लेने का फैसला किया. उन्होंने नैब को दरख्वास्त दी थी कि मेरिट पर यह रेफरेंस नहीं बता. उन्होंने कहा कि ये मेरिट पर रेफरेंस बना ही नहीं. वाज़ेह रही कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ताक़ा अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान पर 16 नवंबर 2020 को फर्दर जुर्मायत की गई थी. जुलाई 2019 में गिरफ्तारी के बाद शाहिद ताक़ा अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल जुडिशल रिमांड पर जेल में भी रहे. फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद रिहा हुए थे. इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास के साथ जंग बंदी का मुआहदा तय हो जाने के बावजूद अपने अहदाफ के हसूल के लिए रफ़ा पर हमला करेंगे.
عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اپنے تمام مقاصد حاصل کیے بغیر جنگ کو راستے میں روک دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان میں کہا گیا کہ ہم پر مسلط کیے گئے جنگ کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، اگر ایسا کیا تو دوبارہ اسرائیل پر حملے ہونے کا امکان زندہ رہے گا۔ بیان میں جنگ بندی کی کاوشوں کو سراہتے کہا گیا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود رفح میں فوجی آپریشن کریں گے، یہ جنگی اہداف کے حصول کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر سعودی عرب کے بعد اردن پہنچے ہیں اور دورے کے اختتام پر اسرائیل بھی جائیں گے۔ یاد ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیلی وزیر اعظم سے رفح میں لاکھوں پناہ گزینوں کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر کسی بھی فوجی آپریشن سے باز رہنے پر زور دیتے آئے ہیں۔ تاہم اسرائیل کا موقف ہے کہ رفح میں حماس کے کئی ایسے کمانڈرز پناہ گزینوں کے بھیس میں موجود ہیں جنہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں حصہ لیا یا ان کی منصوبہ بندی کی تھی۔ بھارت سے علیحدگی کی جدوجہد کرنے والے خالصتان تحریک کے سکھ رہنما گرپتن سنگھ پنو کو امریکہ میں قتل کرنے کی منصوبہ بندی میں نریندر مودی کے قریبی ساتھی ملوث تھے۔ اس بات کا انکشاف عالمی شہرت یافتہ اور مستند ترین امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں کیا ہے۔ یہ رپورٹ امریکی تحقیقی اداروں CIA اور FBI کی گرپتن سنگھ کے امریکہ میں قتل کرنے کی ناکام کوشش پکڑے جانے سے متعلق تحقیقات کی مدد سے مرتب کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب گزشتہ برس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر تھے تب بھارتی انٹیلیجنس سروس را کے آفیسر وکرم یادو مودی پر کڑی تنقید کرنے والے سکھ رہنما گرپتن سنگھ کو قتل کروانے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی ٹیم کو ہدایات دے رہے تھے۔ وکرم یادو نے ٹارگٹ سکھ کارکن گرپتن سنگھ پنو کے نیو یارک میں ایڈریس سمیت اہم معلومات اس ہدایت کے ساتھ آگے بھیجی کہ جیسے ہی گرپتن سنگھ پنو گھر پہنچیں کرائے کے قاتلوں کو گرین سگنل دے دیا جائے۔ امریکی خفیہ اداروں کی تحقیقات کی روشنی میں واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ سکھ رہنماؤں کو امریکہ میں قتل کرنے کے آپریشن کی منظوری بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اس وقت کے سربراہ سمنت گوئل نے دی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق را کے سربراہ سمنت گوئل نے شمالی امریکہ میں سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے اور قتل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ علیحدگی پسندوں کا قتل کرنا ترجیح ہے۔ واشنگٹن رپورٹ کے بقول گرپتن سنگھ کے قتل کی منصوبہ بندی سے بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول بھی آگاہ تھے۔ قومی ٹیم کے سابق کرکٹر باسط علی نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ سے 4 سال بعد ٹیم میں واپسی کرنے والے محمد عامر کو اسکواڈ سے باہر کر دیا۔ اپنے YouTube چینل پر گفتگو کرتے سابق کرکٹر باسط علی نے اپنا T20 ورلڈ کپ اسکواڈ شیئر کیا جس میں انہوں نے تجربہ کار فاسٹ بالر محمد عامر کو اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا، جبکہ اسی طرح سے ریزرو کھلاڑیوں میں نوجوان محمد عارث، آغا سلمان اور محمد علی کو شامل کیا۔ اس سے قبل سابق کرکٹر وقار یونس، سلمان بٹ اور واضح خان نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا تھا۔ تینوں سابق کرکٹرز نے عامر جمال اور اس کے ساتھ ساتھ اسپن ڈپارٹمنٹ کے شعبے میں اسامہ میر اور ابرار کو شامل کیا۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں محمد عامر نے 4 میچوں میں محض 3 وکٹیں حاصل